आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है. And every time there was a gathering, they repeated this story in front of me, that how I was the unwanted child. कि मैं साइको हूँ या अग्रेसिव हूँ. मगर जब मैं नई नई आई थी, जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं. मैं सबकी बातों का विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे वो सब समझ ही नहीं आता कि बोलना कुछ, करना कुछ, देखना यहाँ, जाना वहाँ, वो सब मतलब एक अलग साइंस है, मुझे नहीं समझ आती. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है. अगर नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. I was reading about you and Rangoli, and so you had a fairly conventional upbringing where you were in a way told that boys are slightly more important than girls are. So how did you break out of that? The thing is that from my side, I don't know about Rangoli, but from my side there was no acceptance to this fact that I am any less than anyone around me. So there was a certain discomfort that I felt growing up, that I'm not seen as I would want to be seen as. I'm seen as Rangoli. My parents have had a child before Rangoli who didn't make it. He was a boy and he died, I think, within 10 days of his birth. He was called Hero. So my parents could never really emerge from the loss of that baby boy. And when Rangoli was born, she was celebrated. Like, she was really taken care of, and there was huge celebrations. But when I was born, my parents, my mother especially, I think couldn't come to terms with the fact that there's another baby girl. And how I know these stories with so much details, because every time a guest visited, and every time there was a gathering, they repeated this story in front of me, that how I was the unwanted child. And it's very hard to live in an environment where you're reminded, where you're constantly told that your existence, like you're a sort of fluke who just happens to be here, but are not meant to be here. I could never come to terms with that sort of environment, and I think that really explains why I just broke free in such an extreme way. What do I do to contribute for something like this? I'd say growing up I was a slob. I was really lazy and hated having shower and things like that. And I was a really dirty person. So my parents were fed up, and honestly nothing good ever happened in my life during that phase. I would be very honest. I never made friends, no opportunities came my way. And then I read a lot about elements and composition, energies, and then I came across this fact that energies are of three types: Sattva, Tamas, and Rajas. So the most superior type is Sattva, and that is all about cleanliness, truth, anything which is beautiful in life, artistic. I think ever since I used these techniques in my life changed. आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है. कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं. एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड. तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है. यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है. अगर नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड. अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट,
कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो आई वांट टू टेल द वुमेन दैट लुक इनटू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वही लूज हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर. Kangana, you're the best actress as far as the industry is concerned. I personally feel that this amount of adulation and the adoration that you receive for the work you do and the way you do it, to a certain extent, kind of backfires on the personal front. For instance, जैसे जस्सी ने कई दफ़े इंटरव्यूज़ में बोला है कि बहुत जनों ने I mean while he was giving interviews for various portals, बहुत जनों ने उनसे पूछा कि कंगना के साथ आप क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज शी विल बी वेरी डोमिनेंट एंड शी विल नॉट बी एबल टू you'll not be able to cope up with and all of that. But later on he refuted all of those things straight away. So to a certain extent, do you feel that these statements that are made against you, they kind of affect you? I mean, do they affect you personally and mentally for that matter? आई थिंक डेफिनेटली व्हेन जब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और मुझे लगता है जो आप खुद होते हैं वो आप दुनिया को उस तरीके से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं. आपका नज़रिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर ओन पर्सनैलिटी. तभी तो शीशे में जो आप देखते हैं वो खुद ही को देख सकते हैं ना. तो जब भी वर्ल्ड लाइट मुझ पे गिरे तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है. सो आई थिंक हम जो खुद होते हैं हम दुनिया को वैसे देखते हैं. तो मुझे सभी बहुत विश्वसनीय लगते हैं. सबसे ज़्यादा तो पहले तो मैं सबकी बातों का विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे वो सब समझ ही नहीं आता कि बोलना कुछ, करना कुछ, देखना यहाँ, जाना वहाँ, वो सब मतलब एक अलग साइंस है, मुझे नहीं समझ आती. और कभी कभी जब ये एक बहुत ही हार्श रियलाइजेशन होती है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है या क्या कर रही है, तो इट कम्स लाइक अ बिग स्लैप ऑन योर फेस. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपने ही आप से खुद को दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? आप दुनिया की नज़रों से दुनिया एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ही आंखों से देख सकते हैं. सो कभी कभी बहुत शॉकिंग लगता है कि ये क्या था, मतलब वाओ, इतना कोई किसी के प्रति इतना ज़्यादा प्रेजुडिस कैसे कोई रख सकता है. तो कई बार बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है इस बात की कि ये क्या है और किस तरह से ये मेरा वो बना के रखा हुआ है इमेज. तो एक मुझे याद है, कोई एयरपोर्ट पे जो रिसीविंग स्टाफ होते हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस सब एक्टर्स के साथ में बता रहे थे. तो जर्नलिस्ट उनसे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे. तो मतलब ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं. तो जब मेरे बारी आई तो उन्होंने कहा कंगना कैसी है, क्या वो साइको है? तो आपको लगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज़ दैट. सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको लगा कि दैट्स सो अनफेयर कि किसी को ऐसे एड्रेस करना या किसी के बारे में इतना एक्सट्रीम विचार रखना, ये थोड़ा कम हुआ है अभी तो लोगों को यही लगता है कि मैं साइको हूँ या अग्रेसिव हूँ. मगर जब मैं नई आई थी, जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं. जिस तरह से आपके बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से आपको परसीव किया जाता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, completely bizarre. Like when my sister gave birth to her child, she sent me few pictures and she's like, I want to post them. I said, you're in the hospital bed and they have cut you open, why do you want to post it? She's like, because tomorrow they will say that this is not your child. She's like, looking at the media, I'm 100% sure they will say, ek to he is so white and like you, they will say ये इसने यहाँ transfer कर दिया. So I'm like, how you think? So zigzag, but very likely to happen. क्योंकि वो एक तो curly बाल and इतना pale. So she's like, ये तो मेरा बच्चा लग नहीं रहा, and more likely people will say इसका ही होगा, इसने इसको दे दिया. So like that, we are constantly living in a certain fear. कि कौन कहाँ से हमें क्या बोल देगा. वही अगैन लाइक बच्चे सी मी थ्रू फेजेस, जहाँ पे मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है. लाइक दैट वाज द टाइम माई सिस्टर ओपन द डोर्स एंड शी इज़ लाइक, आई वॉन्ट magazines to cover your house. Because like I am not a person who will bring magazines into my house, like she's like, no, now I will tweet everything, everywhere you go, what you eat. Because how can you go on every platform and be like
be so defensive. Life becomes so difficult. Does that happen to anybody who's from the film industry? It does not. So it's a very scary thing how outsiders are perceived, and what all she's constantly on Twitter. You must have seen that 2 years ago she didn't have time for all that, but she's so protective also because of the bizarre things people talk about outsiders. कंगना, हम सब जानते हैं आप हर चीज़ के लिए बेबाक हैं और अपनी उसी बेबाकी के लिए आप जानी जाती हैं। बहुत बार स्टेज पे भी जिक्र करा गया कि आप बहुत जो किरदार आपने जिया वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं दर्शाता है, बताता है। आज सुबह आप थोड़ी भावुक हो गई, उसकी वजह जानना चाहूँगा। और जब मैं बोलता हूँ कि जया जी का किरदार आपकी निजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बताता है, जिस वक्त आप शूट कर रही थी आपको कब कब महसूस हुआ कि अब ये घर टूटा, अब ये हुआ, जो सीक्वेंसेस आपकी लाइफ में भी चल रहे थे, अब मैंने रिएक्ट किया, अब सामने वाले ने रिएक्ट किया, अब मैंने जवाबी कार्रवाई करी, जैसा आप खुद भी बता रही हैं? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, आप फिल्म नहीं देखना चाहते, मुझसे सुनना चाहते हैं सब। यू हैव टू सी द फिल्म फॉर दैट। एंड आई गॉट वेरी इमोशनल बिकॉज आई जस्ट फील दैट in terms of the way, since I have been successful, usse pehle to nobody cared about me before 2014, but after 2014, since I've been successful, there have been a lot of friction in my environment, whether it's people from competition or whether it is mafia, or whosoever, maybe my mistakes, or maybe I'm too confrontational, maybe I like to say what I feel, whatever it is, but it's been a very traumatic time for me ever since I have been successful, and now and it just got worse and worse. But for me to receive national award on my birthday, and for this very kind group of people who have been absolutely kind to me, like I mentioned this morning, that in South industry, there may be nepotism, but there's no groupism, no bullying, targeting, harassment of outsiders. In fact, you don't feel like an outsider. They own you, they involve you, they're very inclusive of you, and they're absolutely respectful. The way they respect you as a woman, and the way they even interact with you, it is just so overwhelmingly nice, especially because, like I said, whether it is the friction with media, I'm getting banned by the media, or I'm getting banned by the film industry, or getting banned by the heroes. Everywhere I'm getting banned, and suddenly I find this amazing group of people who have only their interest is only in the film. They only care about the product. Everybody goes home. Nobody does blind items or bitches about anyone. And you don't wake up in the morning and you'll be like, oh my God, who has done this nasty piece of PR? Nobody's spreading nasty stories about you. Nobody ganging up with you on with media. Nothing. Just pure work and pure talent. It has been such an overwhelming experience, and I've been really enjoying it. And then my director gifted me such a beautiful piece of cinema, and my team has been very kind to launch it on my birthday. And then national award happened, and I just felt so full, and I just felt like it's such a wonderful, like rarely you feel that way. I don't know how many of us just fail to feel that way every morning. I just felt so happy to be alive and to be born and to be brought into this world, and I was just so full of gratitude for my parents and everyone, and I just broke down. मेरा सवाल आपसे स्पष्ट और साफ है। जया जी पर आप पिक्चर कर रही हैं, अब बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके ज़िंदगी में थे और आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो आप कितना रिलेट करते हैं? दूसरा सवाल ये कि फिल्म के दौरान, ट्रेलर के दौरान हमने एक सीन देखा जिसमें आप कह रही हैं कि ये जया की महाभारत है, अब जया की महाभारत होगी। तो जब आप मुंबई लौटी थी और आपके साथ जो आपका घर तोड़ा गया या ऑफिस तोड़ा गया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप वो जो इंस्पिरेशन था, जो वीडियो आपने बनाया था, वो वहीं से इंस्पायर होकर के बनाया था क्या? लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे रील से रियल में आ रही हैं, जो डिज़ायरेबल भी नहीं हैं और जो हैं भी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी, लेकिन ये मेरा वाकई में मानना है। आप यू पिकअप एनी, आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज़ विटनेस, Ravana insulted Sita, and Kauravas insulted Draupadi. I am nowhere close to those devis, but I am also a woman, and I spoke for my own integrity. I did not harm anyone. I only protected my integrity as a woman.
and then I was insulted. So for me, that what I recorded as a video message, I really truly believe that whenever you disrespect a woman, your destruction is definitely for sure guaranteed.